Morning students, today we will read nature poet of English literature. He is best and renowned poet of English literature, William Wordsworth. He is nature poet and his poetry is very beautiful. He always liked to write about nature because of nature is just like the best friend of him, and we like most nature also. Okay, although William Shakespeare said that man supposes and God disposes, but William Wordsworth always believed in the love of nature, and he has described ever and his poetry about nature. William Wordsworth, 1770, okay, birth and death 1850. Write down, students, these things are important for you. Whenever you will write question, long question, then you will write there also long answers state questions you will attempt, then always you will write birth and death of the poet, just as William Wordsworth, 1770 and 1850 death. Spent most of his life in the Lake District of northern England, where it was situated, Lake District in the northern England. कहाँ पर था ये? Northern England में. And the many hours that he spent wandering about the hills and woods led to the production of some of the finest poetry on nature. As he was a nature poet, how he becomes the nature poet? Because of he was living there in the district left, okay, it was situated in the northern England, north side of England, okay, and the many hours that he spent to wander here and there in the hills and woods, because of he always wants to near of the nature. He is the best poet of nature. He always like to describe about nature, because of nature is just like the best friend of him. So that is why he like most nature. He always wander, it means move here and there in the hilly area and in the woods. Woods it means jungle, and hilly area there in England, in northern side of England. This was the name of district Lake, okay, and he has written the poetry there always, and it was very beautiful poetry which he has written there in the Lake District, okay. वो जो भी पोइट्री लिखते थे लेक डिस्ट्रिक्ट में वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बिकॉज ऑफ द नियर बाय एरिया वॉज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि जो वहाँ का एरिया था वो बहुत ही सुंदर था, ओके. दैट वॉज द हिली एरिया एंड द वुडलैंड इज देयर, जस्ट लाइक वुडलैंड, यू नो, द जंगल and hilly area was there, and it is liked by most of the poet. But the poetry of William Wordsworth was very specific and finest quality, okay. William Wordsworth की जो poetry थी वो बहुत ही beautiful है और finest quality की है. उन्होंने लिखा है, I can see 1,000 of daffodils in a single glance. How is it possible to see 1,000 of the daffodils? Daffodils, you know,
नरगिस के फूल। और वो लिखते हैं आई कैन behold thousands of daffodils in a single glance। एक ही नजर में उन्होंने हजारों नरगिस के फूलों को देखा। How is it possible? But which figure of speech is used here? Hyperbole. Hyperbole is the figure of speech. अतिशयोक्ति अलंकार है ये हाइपरबोल, जहां पर कि एक्सप्रेशन किया जाता है एक्सेसिव एग्जरेशन। इट मीन्स कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताया जाता है, विच वॉज नॉट इन द रियल पोजिशन, जो कि रियल पोजिशन में नहीं होता है। ओके लक्ष्मी, गॉट इट? हेलो, Yes, ma'am. ऑल ऑफ यू गॉट इट? Sunidhi? Yes, ma'am. Okay, all the student should know about this, that hyperbole is the figure of speech, Hyperbole। पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए पोइट्री पढ़ने के लिए। हाइपरबोल, व्हाट इज दिस? अतिशयोक्ति, हिंदी में इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ओके, दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच वेयर द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द एक्सग्रेशन। एक्सग्रेशन इट मीन्स एक्सेसिव थिंग्स, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी से ज्यादा होती है उसको एक्सग्रेशन बोलते हैं। ओके, और वो ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स होती है। ग्रेटर और लेस इट मीन्स किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना या बहुत नीचे गिरा देना। दिस वन इज कॉल्ड अतिशयोक्ति इन हिंदी एंड इन इंग्लिश हाइपरबोल। दिस वन इज द फिगर ऑफ स्पीच। व्हाट डू यू नो अबाउट फिगर ऑफ स्पीच? अलंकार, जो कि आपके हिंदी में होते हैं अलंकार, उसी तरह से आपकी इंग्लिश में भी अलंकार होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो अतिशयोक्ति अलंकार मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। 1000 of daffodils cannot be seen in a single glance, but the poet is using here a beautiful figure of speech. Okay, so whenever the poet wants to describe about the decorative words, then always use figure of speech to describe it. Okay, so his poetry is the best example, finest example of nature. प्रकृति का चित्रण बहुत ही खूबसूरती से किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोयम में। And his work lyrical ballads. Okay, lyrical ballads, what do you know about the lyric word? Yes, lyric क्या होता है? lyric का मीनिंग क्या होता है लक्ष्मी? लिरिक क्या होता है प्रिया? मैम, लिरिक का मतलब सुर। हाँ, rhythmatic is nearby lyric, and words which are in a rhythm is lyrical words. Okay, so lyrical ballads, ballads है। आपको बताऊं, फॉरेन कंट्री में इंग्लैंड में ballads का मतलब क्या होता है? ballet dance you have listened or not? You have listened about the ballet dance? ballet dance के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना? बहुत से बच्चों ने सुना भी होगा आई थिंक, क्योंकि ballet dance में ballad का मतलब ये है, देखिए कई बार ये लोग वॉल, देखिए वॉल वर्ड से ballad बना है, इसके अंदर क्या होता है? पोइट्री जो है, सिंगिंग पोइट्री होती है, और ये लोग ग्रुप में डांस किया करते थे पेयर्स के साथ। ओके, और इट वाज प्लेड, डांस वाज प्लेड देयर इन अ ग्रुप, इन अ सर्कल। ओके, सो लिरिकल बैलेड्स को ऑथर्ड विद कॉलरिज। कॉलरिज भी एक पोएट है, एस.टी. कॉलरिज उनका नेम है। रहस्यात्मक कवि है वो, मिस्टीरियस पोएट है। उन्होंने हमेशा
पोएट्री में मिस्ट्री का यूज किया है। मिस्ट्री जानते हैं, रहस्य का। ओके, उनकी कई पोएम्स हमने पढ़ी हैं और 10th में भी एक पोएम है उनकी, सीबीएसई में थी पोएम, एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जिसमें ब्राइड का डिस्क्रिप्शन किया गया है। और उस पोएम में भी बहुत खूबसूरती से एस.टी. कॉलरिज ने मिस्टीरियस वे में डिस्क्रिप्शन किया है। ओके, देन कॉलरिज इन 1798 में ये लिखा था, को-ऑथर्ड मतलब एक दूसरे के रिलेशन से या एक दूसरे की, ऑथर मतलब होता है इंटेलिजेंसी, यानी जो कि लर्नेड हो, विद्वान हो और जो कलेक्शन करता हो चीजों का, नॉलेज का जिसके पास कलेक्शन हो, ऑथराइज्ड हो, वो उसको ऑथर कहते हैं। और ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटिव होकर उन्होंने लिखा। इज रिगार्डेड एज द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। एक मूवमेंट था रोमांटिक मूवमेंट, उसका स्टार्टअप किया था किसने? एस.टी. कॉलरिज ने और विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ओके, तो बच्चों आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल गई होंगी। He selected subjects from nature. उनकी पोइट्री का जो सब्जेक्ट था, it was always related with the nature and rustic life. What do you know about the rustic word? आपने साइंस में ये रस्ट वर्ड सुना होगा। What do you mean by rust? का मतलब जंक हो रहा है। लेकिन यहाँ पर रस्टिक लाइफ है, अनसिविलाइज्ड लाइफ, जिसमें कि सिविलाइजेशन का प्लेस ना हो। यू नो, ऐसा स्वच्छंद जीवन जिसमें बंधन ना हो। वो जो बंधन से रिलेटेड होता है, वो चीज चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन कभी भी लोगों के द्वारा लाइक नहीं की जाती। आई नेवर लाइक वन डिश दैट शुड बी in that type of manner should be stand, and you should speak like that manner, this manner, because of we always follow the rules and regulation in our life. But this foundation is very typical for us. Whenever we want to survive easily, we want to survive in freedom, then we never can do anything best. But he had done the best because of he was ever free. Okay, and he has lived the life, rustic life. यानी कि rustic life का उनका मतलब है जंग से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर खुली फ्रीडम से रिलेटेड है। ऐसी लाइफ जिसका कोई परवाह नहीं है, जैसा पहन लिया, जैसा रह लिया, बस अपने आप में मस्त रहना, ऐसी लाइफ रस्टिक लाइफ कहलाती है। ओके, जिसमें परवाहें कम हो, दिखावा कम हो, शो ऑफ कम हो और बहुत ज्यादा ज्ञान हो और पवित्रता हो, प्योरिटी हो। ऐसी लाइफ थी विलियम वर्ड्सवर्थ की। He held the view that the language of poetry should be simple and natural. कोई complicated way नहीं होना चाहिए पोएट्री का, because of the people never understand the high language. Okay? जैसा कि आप विलियम शेक्सपियर की पोएट्री में देखते हैं, it is hard in the comparison of William Wordsworth. क्योंकि विलियम, ऐसा नहीं था कि विलियम वर्ड्सवर्थ को हार्ड लैंग्वेज आती नहीं थी, वो लर्नेड नहीं थे। ही इज द ग्रेटेस्ट लर्नेड पर्सन। ओके, लेकिन उन्होंने पोइट्री को एक ऐसी चीज बताया है, पोइट्री एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि दिल से जिया जाता है, ना कि दिमाग से। ठीक है, पोएम जो है वो ऑलवेज अट्रैक्ट आवर हार्ट, हमारे दिल को आकर्षित करती है पोएम, और जिसमें दिमाग का यूज तो होता ही है। बिकॉज ऑफ इफ यू कैन राइट द पोएम, देन यू हैव एन आर्टिस्टिक क्वालिटी. If
are not capable to write poetry, then how it may be possible that you are intelligent? Maybe you are intelligent, but creativity is must. So, the poet William Wordsworth is used in his poetry very simple and natural things. Yes. Now I want to ask some question from here. This is the question time. So every student will give answer. Okay? जिससे पूछूंगी वो आंसर देगा. आप क्लास में बैठकर क्या कर रहे हैं? I want to watch you. Now, what do you know about lyrical ballads? Jyoti, what do you know about lyrical ballads? आंसर दीजिए ज्योति जल्दी से. Are you here? Yes, ma'am. बोलिए. Ballads क्या होता है? Ma'am, lyrical ballad is a हिंदी में बोल दीजिए, हिंदी में बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. But answer should be given. Ma'am, ये singing poetry है हाँ. जिसमें मैम जो मतलब ये ग्रुप में प्ले की जाती है. डांस किया जाता है, उस पर गाना गाया, उस समय गाना ये सॉन्ग गाया जाता है, और ये ग्रुप में कैसे? इन अ सर्कल. दैट इज व्हाई इट इज रिलेटेड टू द बैलेड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which was the name of his district? William Wordsworth district. सुनिधि. सुनिधि क्या नाम था उनके डिस्ट्रिक्ट का? हेलो, आर यू हियर? मैम, लेक डिस्ट्रिक्ट. Lake district. Okay. What is the specialty of Lake district? अर्पिता. अर्पिता, क्या स्पेशलिटी थी उस लेक डिस्ट्रिक्ट की? आर यू इन द क्लास? जल्दी से आंसर दीजिए. हमको लग रहा है ये लैपटॉप से. ओके. लक्ष्मी, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट? मैम, लेक डिस्ट्रिक्ट थी जो मैम नॉर्थन इंग्लैंड के पास सिचुएटेड. लक्ष्मी, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. Okay, ma'am. Ma'am, Lake District is situated in the northern part of England, Yes. in which Yes. the poet wants to write about the nature and writes to. It was full of and he him. likes the It nature was. more It because was full of his hills hills, and woods, and just like a jungle. okay. Woods is also use the word for jungle. Okay. So students, his work co-authored. Who was the co-authored of William Wordsworth in Romantic movement? Aditi Mishra. Are you listening? जवाब दीजिए. कौन था इस रोमांटिक मूवमेंट में पार्टिसिपेशन वाला? को-ऑथर्ड कौन था? आर यू हियरिंग? ईशा, गिव मी आंसर. हु वाज अनदर पर्सन? आप लोग है ना, आंसर नहीं देंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे ज्यादा. Yes, Priya, are you listening? Ballad. अरे भाई, मैं ये पूछ रही हूँ कि रोमांटिक मूवमेंट में उन्होंने किसने हेल्प किया था उनका? Who was another poet? विलियम वर्ड्सवर्थ ने और कोलरिज ने. Yes, S.T. Coleridge. ठीक है. Okay. He selected subjects from nature and rustic life. What do you mean by rustic life? मैम,
Yes? मैम जब जैसे कोई भी अपने हिसाब से लाइफ जीना, किसी की परवाह ना करना. Life full of freedom and near of the jungles and pure areas. Okay? This one is called rustic life. ठीक है? तो now we will start the poem. The world is too much with us. Okay? In this poem, the poet wants to tell us about the world. World, it means it is unlimited place. It's spread everywhere. Okay? And is it too much with us? It means the world is playing an important role in our life. So it is very wide spread everywhere and it is too much with us. We ever knew to people, know other people, and they know us about us, and we mixed with each other, our emotions mixed with each other, and everywhere we wants to go and we wants to get enjoyment and we wants to share our emotions with each other. So now what is happening there in the poem of William Wordsworth, we will see. Okay? The world is too much with us, late and soon. Getting and spending, we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away, a sordid moon. Now, the poet is saying here, the world is too much with us. It means it's spread from one point to last point. A lot of dots are here between this point and that point. So the spreading of this line, we need a lot of dots because of we wants to get start from here and there is the end of the life. Okay? Birth, first of all we get birth and we play different type of roles in our life and at last it is the end of our life. It means death. Okay? So there is a many dots, not a single dot. It means so many places and so many people we meet with each other and our thoughts and ideas ever spread everywhere because of now today we are reminding William Wordsworth, who is absent forever from us, but we are rememorize him because of we love poetry and we wants to read poem. That is why his knowledge is spread everywhere and we like him most. And generation through generation, the people ever think about him. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जा रहे हैं लोग किसको याद करते हुए, विलियम वर्ड्सवर्थ को और डिफरेंट टाइप के पोएट्स। क्या है इनमें ऐसा ज्ञान, लर्नेड है वो, एक्नॉलेजमेंट विच ही हैज गिवन अस, जो कि उन्हें
इंटेलिजेंसी, एक्नॉलेजमेंट, ही प्रोवाइड अस, उन्होंने हमें प्रोवाइड किया. ओके, that's why we are getting knowledge from the poems of William Wordsworth. Okay, so the world is too much with us, and late and soon. First of all, we were not familiar with each other. पहले हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं. But later or sooner, we will know each other. Okay? कुछ दिनों के बाद हम एक दूसरे को जान जाएंगे. Okay? And our emotions which will emerge with in it. It means हमारे इमोशंस जो है लेटर और सूनर, जल्दी या देर से एक दूसरे में एमर्ज हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे. ओके, कहने का सेंस ये है कि ये संसार बहुत बड़ा है और हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, हम एक दूसरे के इमोशंस को टच करना चाहते हैं. और अगर हम एक दूसरे से मिलते हैं या हम प्रकृति से मिलते हैं, हम नेचुरल ऑब्जेक्ट से मिलते हैं, लेटर और सूनर, देर से या जल्दी. ओके, सो अपोजिट्स, टू अपोजिट्स आर यूज्ड हियर. Which figure of speech can be used here? What do you know about the figure of speech? Onomatopoeia. Oh, sorry, एक second. Oxymon. Do you know about the figure of speech oxymon? I have already told you. Lakshmi, do you know oxymon figure of speech? मैम ऑक्सिमोन फिगर ऑफ द स्पीच, मैम इसके अंदर जो एक ही लाइन के अंदर दो अपोजिट वर्ड दे दिए जाते हैं या फिर एक ऐसा वर्ड दिया जाता है जो एक ऐसा वर्ड होता है जिससे मतलब एक अपोजिट होता है और एक अपोजिट होता है. Okay, बेटा, you know I can understand. So late and soon, both opposite words are used here. So figure of speech oxymon. O X by M O R O N. R is silent here. Okay, but we pronounce it oxymon. Okay, विरोधाभास अलंकार. कौन सा अलंकार यूज किया गया है यहाँ पर पोएट के द्वारा? विरोधाभास. कौन सा अलंकार यूज किया गया है? Can you speak with me? Oxymon. Priya, which Yes, figure ma'am. of speech is used here, beta? Oxymon. Oxymon. Yes. Opposite thoughts and ideas are put together. Okay. So both opposite words are used here. So oxymon figure of speech is used in this line. This can be asked in the examination. Okay. Which figure of speech is used in this line? Underline will be get you there in examination and board classes also, and the examiner can ask about it which figure of speech is used here. देखो कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स के अंदर भी जब आपका सब्जेक्ट ये होता तो इसके अंदर आपको ये भी जरूरी नहीं है कि वो आपका सब्जेक्ट हो तभी आपसे क्वेश्चन पुट अप करें. दिस कैन बी गिवन, अंडरलाइन कर दिया इंग्लिश में, एंड इट मे बी आस्क्ड क्या which figure of speech is used here. They will be right oxymon, onomatopoeia, okay, metaphor, simile. अब आपको पिक आउट करना है चारों वर्ड्स में से कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है. ओके, दैट्स व्हाई यू शुड नो किसको क्या. हाइपरबोल, तो आपको हाइपरबोल पता है क्या होता है? अभी अभी मैंने डिस्क्राइब किया था. हाँ बेटा बताइए क्या है हाइपरबोल? मैम किसी भी चीज को बड़ा चढ़ाकर बताना. Yes, that it is called hyperbole. Okay. And what is oxymon?
सुनिधि, व्हाट इज ऑक्सीमोन? मैम अगर एक ही लाइन में दो अपोजिट वर्ड्स आ जाते हैं उन्हें ऑक्सीमोन कहते हैं। हाँ जी। और इसके अलावा मैं जितने जितने आपकी फिगर ऑफ स्पीच आती जाएंगे आई विल टेल यू। ओके, तो पोएट इस फर्स्ट लाइन में क्या कहना चाहता है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये जो वर्ल्ड है ये बहुत बड़ा है, एंड बी immersed here in the nature. We all people are immersed in the nature. कैसे immersed हैं हम नेचर में? जैसे क्षिति, जल, पवन, गगन एंड समीरा, ये बोलते हैं इनसे मिलकर बना शरीरा। ये हिंदी में कहावत है। तो आपको पता है कि यही 5 एलिमेंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है और उसी से ह्यूमन बींग्स बने हैं। ठीक है, तो गेटिंग इन स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। देखो क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारी पावर्स हैं। गेटिंग इट मीन्स प्राप्त करना, स्पेंडिंग स्पेंड करना, खर्च करना। ओके, We lay waste our powers. हम अपनी शक्तियों को, पावर्स को पहचान नहीं पाते हैं। आधी जिंदगी तो हमारी उन शक्तियों को पहचानने में निकल जाती है। बट जो जान जाते हैं, जो समझते हैं, they use very well it. वो इसका प्रयोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं। Do you understand what I want to say? लक्ष्मी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी एनर्जी को, अपनी इंटेलिजेंसी को अगर टाइम पे पहचान लें तो यू कैन अचीव द बेस्ट इन योर लाइफ। अपने जीवन में सबसे अच्छा आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, देन द पोएट ऑल्सो वांट्स टू डिस्क्राइब हियर we lay waste our powers because of we are not paying attention towards our energy, because we have a lot of energy, we have a lot of power, but we are not using it perfectly. So that is the matter. If we have power, then we should know how to use it, because of using is necessary, not wasting the powers. If your waste is your power, then what will happen with you? You will be ruined forever. You will be destroyed forever. विनाश की कगार पर आ जाओगे तुम, अगर तुमने अपनी पोजीशन को नहीं पहचाना, अपनी पर्सनालिटी को नहीं पहचाना, अपने व्यक्तित्व को नहीं पहचाना, then what will you do? तब तुम क्या करोगे अपने जीवन में? तो सबसे पहले we should know about our powers, and which type of power? Willpower, which make us a specimen, a special man. If you want to be get a special man, then you should pay attention towards your soul, towards your willpower. Soul is related with the willpower. Then if your willpower is strong, then you can achieve anything in this world. Okay, so the point is also saying here, if you know how to spend and how to get past, then you can lead a very successful life. If you want to be successful in your life, then you should collect powers. Okay, and you should know how to get powers and how to spend powers. Clear, students? Is it clear Yes, to you? ma'am. Okay. Little we see in nature, that is ours. हम बहुत कम ऐसी चीजों को देखते हैं नेचर में जो कि हमारी है। लिटिल, बहुत कम। We see in nature, प्रकृति में। जबकि हम कहते हैं कि हम प्रकृति से ही बने हैं, क्योंकि जितना जितना हम सिविलाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं उतना ही इम्परफेक्शन हो रहा है। वी थिंक अबाउट इट वी आर परफेक्ट,
we never be perfect. जितना हम प्रकृति से दूर हुए हैं उतनी ही प्रॉब्लम्स हमारे साथ हुई हैं, उतनी ही प्रॉब्लम्स इंक्रीज हुई हैं. Nowadays we are facing coronavirus, so it is also related with the artificiality of us. आर्टिफिशियलिटी जितनी हमारे अंदर आई उतने ही हम प्रॉब्लमेटिक हो गए. बिकॉज ऑफ नेचर इज द फुल ऑफ प्योरिटी ऑलवेज एंड इट डिमांडेड ऑल्सो. प्रकृति जो है वो हमेशा प्योरिटी से भरी हुई है. प्योरिटी ही जरूरी है. जस्ट एज वाटर, वाटर शुड बी प्योर, एयर शुड बी प्योर, then we can live a very free life and we can get enjoyment. Okay, so little we see in that nature. और हम तो नेचर की तरफ देखते ही नहीं है, और जबकि नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. Then we have given our hearts away, a sordid wound. That is the sordid wound. It means एक तरीके की ब्लेसिंग, वरदान. wound it means वरदान. किसने दिया है हमें? प्रकृति ने वरदान दिया है हमें. हमारी बॉडी में 70% वाटर एग्जिस्ट करता है. फ्रॉम वेयर इट कम? इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द नेचर. बिकॉज ऑफ, अगर हम कहीं पर भी देखें तो हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो नेचर की वजह से ही है. ओके, वी कैन नॉट इग्नोर इट. हम इस बात को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते. वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे. और अगर हम अपना दिल दूर दूर तक ले जाते हैं तो हमें प्रकृति और प्रकृति ही दिखाई देती है. नथिंग एल्स इज एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. एवरीवेयर नेचुरलनेस and everywhere purity, and purity is always good for our hearts. जो हार्ट प्यूरिफाई होता है, जिसमें प्योरिटी होती है, इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अदर्स. वो हमेशा ही दूसरों के लिए बेनिफिशियल होता है. वी कैन नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी. हम प्योरिटी की इम्पोर्टेंस को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते. Because of it is very essential for us. क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही essential है. And these objects are very essential for us. Now it's already 12:07, so I want to close the class. I will take 12th class. So thank you. Have a nice day all of you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.